गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड हिमालयन 2021 एडिशन, जो कि मैं ओन करता हूं, नॉर्थ बिहार का फर्स्ट बाइक। उसका टाइम है सर्विस कराने का, तो चलिए हम लोग चलते हैं सर्विस कराने के लिए। ये दोनों पिन के बाहर निकालना है, उसके बाद ये पिन को बाहर करना है, उसके बाद डिस्प्ले सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, सीरीज पेपर मार देना है, उसके बाद फिर लगा देना है। ये जैसे पंखा में क्लिप लगता है ना, पंखा में देखो मतलब क्लिप लगता है। डिस्क का जब साउंड का प्रॉब्लम हो तो ऐसे करके ठीक किया जा सकता है ना।
फ्रेंड्स जिनको नहीं पता वो उनको बता दूं कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन में 2 लीटर इंजन ऑयल लगता है, जो कि आप देख रहे हो कि किस तरह से रिफिल किया जा रहा है। इसमें सेमी सिंथेटिक ऑयल डल रहा है, जो रॉयल एनफील्ड लिक्विड गन के नाम से आता है। आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो फ्रेंड्स अभी हमारा चैन क्लीनिंग का काम चल रहा है। रॉयल एनफील्ड एसेंशियल चैन लुब्रिकेंट एंड चैन क्लीनर अप्रॉक्स 185 का आता है, जिससे कि हमारा चैन क्लीन फर्स्ट हमारा चैन क्लीन किया जाता है और फिर उसे लुब्रिकेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह हमारा चैन क्लीन हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चैन का क्लीनिंग चल रहा है और बहुत इफेक्टिवली चैन क्लीन होता है। चैन लूप जो है वॉश होने के बाद कीजिएगा ना। हाँ, वॉश होने के बाद कीजिएगा, ठीक है ना। और भी कुछ बच गया। लगभग आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हैंडल वगैरह चेक कर लिए। अब बताइए मुझे ABS के बारे में। ये ABS जल रहा है, जैसे ही 5 की स्पीड हो जाएगा ऑटोमेटिक इसको बंद हो जाना चाहिए। बंद हो गया इसका मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। या बंद नहीं हो रहा है तो कहने कहीं प्रॉब्लम है, या ना जल रहा है वो भी प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब ये जो अभी जैसे इग्निशन ऑन किए तो भी जलना चाहिए और 5 के स्पीड जाने के बाद ये ऑफ हो जाना चाहिए। इन केस अगर ये नहीं जलता है, अगर इग्निशन ऑन में तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। और अगर 5 के स्पीड में जाने के बाद अगर ये ऑफ नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी गाड़ी अच्छे से सर्विस हो गई है। अब गाड़ी जाएगी वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया बहुत ही नीट एंड क्लीन था, बहुत ही अच्छे तरीके से लोग वॉश करते हैं यहाँ। तो आप देख रहे हैं वॉशिंग एरिया में अब हमारी गाड़ी जा रही है, तो देखते हैं कैसे वॉश होता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से वॉशिंग एरिया बनाया गया है और गाड़ी वॉश भी परफेक्टली किया जाता है। तो आइए देखते हैं वॉशिंग के बाद हमारी गाड़ी कैसी लगती है।
तो फ्रेंड्स बात कुछ ऐसी हो गई है कि हमारे कैमरे की मेमोरी हो गई है लो, जिसके लिए मैं आपको आगे का वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट इतना मैं बताऊँगा कि अपनी गाड़ी अच्छे से वॉश हो चुकी है, अच्छे से सर्विस हो चुकी है, कोई भी इशू नहीं है और मुझे एजेंसी से कोई भी शिकायत नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। और मेरा जो सर्विस कॉस्ट है वो फर्स्ट सर्विस का मिनिमम सा 1148 रुपीज़ का है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।